होगा, आपने जाना होगा कि नई फेलोशिप आई है एंड एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है। तो उसके रिलेटेड आज हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर चेतन सिंगाई, जो कि एकेडमिक लीड एंड एसोसिएट प्रोफेसर है चाणक्य यूनिवर्सिटी में, एंड वो चीफ कंसल्टेंट एंड कन्वीनर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आई वेलकम चेतन जी। सो गाइज, ये जो सेशन रहेगा इसमें पूरी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है रिगार्डिंग द व्हाट इज द चाणक्य फेलोशिप एक्चुअली, एंड आपने क्यों इसमें अप्लाई करना चाहिए। उसके साथ ही आपके जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस रहेंगे ना, ये ड्यूरिंग द डिस्कशन आप चैट बॉक्स में डालिए, हम उसको बीच बीच में तो लेंगे ही, बट एट द एंड अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो हम उसको कवर करें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन वाले आने वाला है आपके सामने। बहुत ही नॉलेजेबल चीजें आपको जानने को मिलेंगी रिगार्डिंग द सोशल सेक्टर, रिगार्डिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फेलोशिप। तो लेट्स स्टार्ट चेतन जी। Thank तो you. चेतन Namaste. जी, या चेतन जी, थोड़ा सा लाइक we'll discuss about the what why is the higher education important, and how doing the post graduation education can help you to become a social sector professional. Thank you, Saraswati ji, and सबको मेरा नमस्कार. Thank you for this opportunity. I think you have, as they say, hit the nail on the head to start with, because we are talking about higher education, and at the time when the nation is going through a major transformation. अब अभी जब भारत में देखा है कि काफी सारे चेंजेस हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, थैंक्स टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. उसका हम जब अभी इम्प्लीमेंटेशन का हम लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, काफी सारे चेंजेस आए. सो वन इज सिस्टमिकली लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग, but at the individual level, why should we opt for higher education, or why should we take higher education seriously, is the fact that we have to logically take our learning and knowledge to a certain level, because the purpose of higher education is not yet achieved in the system that we are in. So higher and higher we go, more and more we tend to get opportunity to. For instance, I'll give one example. What is the purpose of higher education? One of the many purposes is to enhance our knowledge to the maximum capacity. So the question to sub audience को और आप सबको जो field में है, sector में है, have we really maximized our potential? हम हमारा पोटेंशियल इधर है, हमने अब उसको पूरा मैक्सिमाइज किया है कि नहीं. तो हायर एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है, जहाँ पे हमको ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, one's potential is to be achieved. So hence, I think it is very, very important, and hence this postgraduate programs, whether it is 1 year, 2 year, whether it is a fellowship like what you're going to talk about, is making you to first of all identify your potential, then Exactly, that tell is you. most important. सही है. तो आपको पहला आपका पोटेंशियल, आपका वो एक आईना आपके सामने आएगा, पोटेंशियल आपका कितना है. फिर उसके बाद जितना उसको मैक्सिमाइज किया है कि नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर वो एक सिस्टम में मिलेगा. एंड देन दैट इज व्हाई आई स्ट्रांगली फील दैट वी आर keen and should be keen to take up this higher ladder of our learning. हाँ जी. So, Chetan ji, that you are already part of the team of NAP and NCF, and we want to know about your journey and your experience. And also, we want to know that कि जो NAP है, उसको उसका implementation जो है वो हायर एजुकेशन, जो इंडिया का हायर एजुकेशन है उसके ट्रांसफॉर्मेशन में उसका क्या रोल है. सही है. थैंक यू. बिकॉज आई वॉज एबल टू सी द इनसाइडर्स व्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर या स्टूडेंट होके एक अच्छा लाइफ टाइम मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि पॉलिसी कैसे बनते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग समझते हैं कि एक पॉलिसी, एक 11 लोग 12 लोग एसी रूम में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं और हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन का हम लोग सोचते हैं. नहीं, ऐसा नहीं था. इनफैक्ट इन एनईपी it was very, very critical that there was a lot of emphasis on evidence कि अभी हाल क्या है, मतलब कल क्या था और कैसा उसको होना चाहिए, उसका बहुत सारा डिस्कशन हुआ था. मगर अभी क्या हमको रिक्वायर्ड है और आगे 20 साल या 25 साल के बाद क्या होने वाला है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा ड्रिवन एविडेंस बेस्ड डिस्कशंस. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ.
फॉर एग्जांपल एनईपी में एक पॉइंट आया था मल्टीपल एंट्री एग्जिट के बारे में, जो अभी हाँ पॉलिसी में हाँ। है। सो मल्टीपल एंट्री एग्जिट के बारे में जब डिस्कशन हुआ, ये पॉइंट कैसा आया? फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स मेनी एकेडमिशियंस, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मेनी वुमन, वो कभी हम्म कभी ऐसा हो जाता है कि मैरिज के बाद अपने अपने हम्म हस्बैंड के साथ, पर्टिकुलरली बिकॉज आवर सिस्टम इज सच फैमिली सिस्टम, दे माइग्रेट टू अनदर प्लेस, मे बी जी जी अनदर डिस्ट्रिक्ट, अनदर सिटी। स्पेशली जैसे हम लोग अभी बैंगलोर में हैं हम लोग, सो आईटी सेक्टर ने सबको उधर अभी जी माइग्रेशन जाना पड़ता है। प्रमोट किया है। तो क्या हो जाता है कि मेनी टाइम दिस वन ऑफ द रीजन ऑफ मल्टीपल एंट्री व्हिच आई एम शेयरिंग कि हाउ पॉलिसी मेकर्स थे। सो उसमें एक पॉइंट आया कि ये जो अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस है, उसको अभी हम कंटिन्यूएशन दिया जाए। एक वुमन जो मैरिड पर्सन के साथ आते हैं, हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने फर्स्ट ईयर कहीं पे जो किया है, आगरा दिल्ली वगैरह, अगर वो इधर आते हैं तो एक कंटिन्यूटी होना चाहिए। सो एक या मोटिवेशन। सो मल्टीपल एंट्री एग्जिट में एक फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस जो लेके आया है, वो एक एग्जाम्पल है कि थॉट प्रोसेस का। या Similarly, there were many other examples of thinking, and especially what will NEP transform is, I would say, first, we don't need engineers to do engineering work. Similarly, we don't need social scientists to do social science work. Engineer can also do social science work. Social science people should also be able to do engineering work. That is a very करेक्ट। simple way of transformation. For example, सेकेंड इज, जो हम लोग एनईपी में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बन रहा है अभी, वो एनईपी के मार्गदर्शन में बन रहा है, जो नेशन में पिछला वाला था 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जी द इमीडिएट पॉलिसी रेफरेंस वाज 1986। अब ऐसा या है कि 2020 का पॉलिसी है और 2023-22 में एक एनसीएफ बन रहा है। So there is a policy reference point wherein there is a policy continuity on one hand, but the major transformation is, आज तक हमने एजुकेशन को एक सिस्टम करके नहीं देखा था, हमने उनको यस एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में देखा है। अनफॉर्चुनेटली प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जी सेकेंडरी, जी पोस्ट सेकेंडरी, देन हायर एजुकेशन। अब जो एनसीएफ और एनईपी दोनों एक साथ जो एक पर्सपेक्टिव ला रहे हैं, इज टू सी एज एजुकेशन एज अ कंटिन्यू। फॉर इंस्टेंस, जो फाउंडेशन स्टेज का जो एनईपी में है और एनसीएफ में जो लाया गया है, जो भी आप कंटिन्यू। हाँ, जो भी आउटकम आएगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन में, सो फाउंडेशन स्टेज एज, जो इनिशियल एज है, एज ऑफ 3 to 8, दैट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रिपरेटरी। सो प्रिपरेटरी में जो चेंजेस आना है, उसका इम्पैक्ट होगा मिडिल स्टेज में, मिडिल स्टेजेस में जो चेंजेस आएगा उसका इम्पैक्ट होगा सेकेंडरी में। सो अभी एक स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी एक कंटिन्यूटी है। उसके अलावा स्कूल से हायर एजुकेशन पे कंटिन्यूटी आ रहा है, क्योंकि अगर हमको मल्टी डिसिप्लिनरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, चॉइस, स्किल बेस्ड, वोकेशनल, ये सब हायर एजुकेशन में लाना है, तो सेकेंडरी में भी हमको उसको एम्फोसिस करना है। दैट इज आवर नाइन्थ, जो 9, 10, 11, 12 ग्रेड है। सो इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन एनईपी का है। और लास्ट पॉइंट ऑफ एनईपी, विच अमॉन्ग मेनी पॉइंट्स, because this is जी a huge document and you all know how important is a document. Another important point I would like to bring is the emphasis on critical thinking, problem solving, and creativity. These three are called as 21st century skills, right? And it constantly brings this perspective into the education, both at school and higher education, but looking as a continuum, not as watertight compartment. जो भी इम्पैक्ट हायर एजुकेशन में होना है, वो स्कूल में भी ट्रांसफॉर्मेशन होना है। जो भी स्कूल में होना है, हायर एजुकेशन में होना, बिकॉज टीचर एजुकेशन उधर होता है। सो इट्स अ sort of a cyclical process. So that is how I would see what you call transformations in NEP. And the process also went behind was more of evidence-based, need-based, and also looking at inclusivity and equity in the larger essence of the एग्जैक्टली। education system. जी चेतन जी। सो Yeah. जब एनईपी आया था ना नया, जब मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो मुझे भी वो मल्टी एंट्री एग्जिट है जो, वो बहुत अच्छा लगा था उसमें से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जो नाउ डेज लाइक यूथ है, कुछ यूथ बीच में ड्रॉप आउट करते हैं, फिर उनको 1 साल के बाद उनको ये फील होता है कि नहीं, ये जो फील्ड है लाइक ये मेरे लिए नहीं है, मुझे इसमें नहीं अच्छा लग रहा है।
I'm not feeling comfortable to continue that study. So this is an opportunity for those youth who wants to change their area of study and area of subject. So चेतन जी एक्चुअली बारिश की वजह से बिजली का प्रॉब्लम हो गया है. सो मैं अपनी वॉइस के साथ कंटिन्यू करूंगी. हमारे सारे एस्पिरेंट्स मुझे जानते ही हैं. तो वो आपको देखते रहेंगे और मुझे सुनते रहेंगे और आपको भी सुनाते रहेंगे. ठीक है. तो एस्पिरेंट्स, आई होप आप भी आप एडजस्ट कर लोगे आज के लिए. एंड अनदर थिंग कि आप जो भी क्वेश्चंस है आप क्वेश्चंस पूछते रहो, तब तक मैं अपने क्वेश्चंस रेडी रखती हूँ. So Chetan ji, let's move ahead. Sure. And now we want to know that how Chanakya came up. I mean, like, what is the thought behind it? What is the vision and mission of the university? So, thank you for the question because it's important that our viewers also and our prospective Yes. sort of fellows also who know about this. So, Chanakya University is a university with a public spirited philanthropic initiative, right? So, it is made up of people, like minded, passionate people coming together. जैसे हमारे इन्फोसिस के फॉर्मर हेड है और वेल नोन पॉपुलर फिगर लाइक मोहनदास पै जी, कृष्ण गोपाल कृष्णन जी, then हमारे जिंदाल group of, not the Jindal of the Sonipat Haryana part, but Jindal also in Bangalore, Sitaram Jindal ji. So they all have thought about this vision, and of course हमारे pro chancellor MP Kumar ji. So they have all put together their hard earned reputation as well as the revenue or money, so in order to build this public spirited philanthropic initiative where it is Mm-hmm. largely driven by the passion and commitment with a purpose that we have to create knowledge and transformative leaders for holistic development. Yes. So हमारा vision जो है वो है कि develop youth with capabilities to be inspiring leaders, very very important. That's why fellowship program becomes very critical for creating that inspiring leaders, change makers, and also to nurture scholarship with high impact research and practice, and more importantly facilitate transdisciplinary, multidisciplinary studies, which are not again silos but a horizontal experience that one has to Mm-hmm. create. But with important point, which I'll end before I come to the bigger question, is values. हमारा Yes. यूनिवर्सिटी में जो वैल्यूज का एम्फोसिस है, इंटेग्रिटी, ह्यूमैनिज्म, क्रिएटिविटी, academic freedom and team spirit. I'll give one example, especially academic freedom, which is largely जी. missing in most institutions, is you should not be as a university. So आपने यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया है, आप यूनिवर्सिटी को फंड कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, दैट्स गुड. बट अगर आप ये बोलेंगे कि ऐसा क्लास ऐसा पढ़ाना है, क्लास में ये यूनिट पढ़ाना है, क्लास में यूनिट नंबर 1 नहीं यूनिट नंबर 3 पढ़ाना है, तो इट मीन्स एकेडमिक फ्रीडम नहीं है, राइट? सो ये Yeah. अभी इस यूनिवर्सिटी में, चाणक्य यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक फ्रीडम इज पार्ट ऑफ द वैल्यू कि आपको ऐसा नहीं करना है. तो फैकल्टी या स्टूडेंट्स को दे शुड हैव देयर ओन स्पेस, दे शुड हैव देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंस, they should have their own tailor made experience. So that is one of the Mm-hmm. most important. So that was the thought behind the establishment of the university in its short That form. is really great to know, actually. Yes. Very beautiful thought. Yeah. Yes. So that is the quick essence of that question, but I'll come back to it if we are looking at linking it to other questions. Saraswati ji. Yes. Yes, yes, sure. So, how it relate to the NEP and what is the uniqueness of this university actually? Yeah, And how, yeah. yeah, how it different from other universities? But we have there are so many different universities which provides the course for the social sector for higher education. So, what is the uniqueness in the Yeah, Chanakya? you had the answer in the question also. So one Yeah. of the uniqueness is alignment with the national education policy, right? So Yes. because this is a one of its kind of the university in the country where in the act, the legal act of the university itself has reference to NEP कि हमारा जो Mhm. academic program होंगे, जो हमारा नॉन एकेडमिक प्रोग्राम्स जो भी होंगे वो NEP के अलाइंड होंगे. तो बिकॉज हमारे Okay. चांसलर जो है प्रोफेसर एम के श्रीधर, Mhm. he is a member of the committee to draft the national education policy as well as the national curriculum framework.
So he himself brings this perspective, and more importantly our advisory council जो यूनिवर्सिटी का, वो डॉक्टर के कस्तूरंगन जी चेयर करते हैं। एंड Yeah. वो भी चेयरमैन, वो जो है एनईपी के चेयरमैन है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के चेयरमैन है। और प्रोफेसर मंजूर भार्गवा जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है मैथमेटिक्स, हु इज आल्सो मेंबर ऑफ एनईपी एंड एनसीएफ, he is also the member of advisory Okay. council. So we have the best minds working with not only the university but also the most eminent personality of NEP and NCF. That's one unique point. Second unique point which I would like to emphasize is we emphasize on 8 C's, right? Mm-hmm. Art C's: curiosity, जी. competence, compassion, creative thinking, character, culture, communication, and commitment. Right? So, because if you go back to the values which I mentioned, integrity, humanism, creativity, freedom, and team spirit are all leading to these 8 C's of personal effectiveness. See, most Hmm. universities, not all, but most of them are so mechanical, robotic, right? So there is no human जी. component, there is no personal effectiveness component. So हमारे यहाँ जो है कोर्सेज है या जो एकेडमिक इकोसिस्टम है, जैसे होगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज जो एनईपी में बोलते हैं कि वी शुड नॉट यूज द वर्ड को करिकुलर, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग द वर्ड को करिकुलर, बट इट शुड बी कॉल्ड एज Yeah. पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ साइकिल, लर्नर्स लाइफ साइकिल का जो एक्सपीरियंस है, वो एक होलिस्टिक Mm-hmm. पर्सपेक्टिव में जो यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही यूनिक है। इसीलिए हम हमारा यूनिवर्सिटी में इट इज मैंडेटरली, और यू नो वी हैव मेड प्रोविजंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू बी रेसिडेंशियली लोकेटेड ऑन द कैंपस। देयर इज लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम, वो भी बहुत क्रिटिकल है। तो वो एक हमारा Yes. एसेंस है। रियली अमेजिंग। एक्चुअली मैं जब सुन रही थी मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी जो है यूथ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे उनको लाइक अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हमने देखा कि एनईपी के रिगार्डिंग एंड अदर थिंग, तो अभी इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो आई फील दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट द चाणक्य फेलोशिप इन सोशल साइंसेस नाउ। So let's discuss about it. Sure. So what is the eligibility criteria of this fellowship? Then, सो सरस्वती जी, उसको हमें दो तरह का रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। एक है कि जो नॉन स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स है, एलिजिबिलिटी है okay. जो बंदा जो लर्नर इज वेरी कीन, वेरी पैशनेट, वेरी कमिटेड टू द Hmm. कॉज ऑफ सोसाइटी आर ऑल वेलकम, बट फॉर द sake Yes. of regulatory requirement, any undergraduate degree is acceptable from a recognized university. Any undergraduate degree is eligibility from a recognized university, and they are most welcome. But of course, as I said, passion, commitment for society and for Yeah, that is most important that's thing. very important. Because वहीं से मोटिवेशन मिलता है कुछ भी चीज करने के लिए, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। Yes, yes. So can all pan India friends can apply for this fellowship? Yes, very much, very much. In fact, that is why this is a residential program. That is why we Mm-hmm. are able to provide more and more broader experiential insights from the various reputed scholars and eminent faculty members. They are most welcome to apply. So actually, I want to know one thing. Why we are calling it fellowship? Because as we are seeing it as a course, as a education, so a fellowship is a practical experience and with education. So why we are calling it as a fellowship? Yeah, as you rightly said, it is a combination of both theory and practice. So, and it Yes. is a bridging of theory and practice. So in a sense, fellowship is because we want the fellows to become the leaders and the change makers Uh-huh. in their domain. So essentially, here there is a theoretical component, and at the same time there is a component of practice, that is through internship, through exchange of ideas. As I said, learning beyond classroom is very, very Yes, important. yes, yes. So that is why this fellowship is not a typical डिग्री प्रोग्राम where आप एग्जाम लिखते हो Okay. और Mm-hmm. वो क्या बोलते हैं उसको, बाय हार्टिंग रट्टा मार के एग्जाम लिखते हो, एंड देन यू जी रियलाइज जी। ओ माय गॉड। Rote memorization. Yeah. करेक्ट। सो इधर फेलोशिप मतलब आप जो सीखते हो उसको अप्लाई करते हो,
उसको आप Okay. मतलब सी इन मेनी टाइम यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्या होता है कि वी ऑफ्टन प्रॉब्लमेटाइज द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को पढ़ते Yeah. हैं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लमटाइज करते हैं। और फेलोशिप में Mm-hmm. थ्योरी प्रैक्टिस ब्रिज, यू शुड सॉल्व द प्रॉब्लम and be the change maker. Yeah. That skill set and leadership component is very important. So you don't become a learner, but you also become a Mm-hmm. facilitator in the learning process. Wow. So, what is the model of this fellowship program? I mean, what is like duration and how many years it will took to complete this course? And I just want to know about the model. Sure. Thank you again for this question, because this would help many of our viewers to Bilkul. consider this in due course. This is a purposely and carefully crafted 1 year program. Why? Because we wanted it to be uh, tight, but at the same time very relevant and appropriate, not to simply feed courses and extend the duration where it will not add value to any one of us. In fact, it will add more liability. तो इस हिसाब से 1 साल का हमने जो प्लान किया है मॉडल में, कि 4 ब्रॉड डोमेन्स में नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक है इकोनॉमिक्स डोमेन होगा, दूसरा होगा पब्लिक पॉलिसी, फिर होगा इंटरनेशनल Mm-hmm. रिलेशंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज, फिर होगा पॉलिटिक्स वाला। 4 ब्रॉड डोमेन्स। इसके अलावा एक क्रॉस कटिंग डोमेन्स होंगे कुछ, एटलीस्ट 2 मैं बता सकता हूँ इमीडिएटली, इज एकेडमिक राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। सो दैट विल बी क्रॉस Okay. कटिंग। ये जो 4 डोमेन बताया वो वर्टिकल होंगे, तो ये क्रॉस कटिंग होगा, क्योंकि ये थ्रूआउट Mm-hmm. द फेलोशिप वो एक स्किल ऑफ राइटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। देन होगा अनदर क्रॉस कटिंग, होगा कि आप एक एक्सपीरियंशियल मॉड्यूल, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशनल पाथवेज जो हम लोग बोलते हैं, during the course you will be exposed to not only you going to the field as part of the course, जैसे हमारे एक कोर्स है रूरल डेवलपमेंट में, so उस रूरल डेवलपमेंट Mm-hmm. कोर्स में they will be, we have a tie up with NGOs and think tanks where they will go to field to really understand the issue, because we cannot sit in a air conditioned room to understand rural problems, we have to go there and Exactly. engage. We have to go there. एब्सोल्युटली। सो वो जब जाएँगे, उनका एक 2 फ़ायदा होगा उधर। एक तो थ्योरी टू प्रैक्टिस लिंक होगा, दूसरा होगा कि दो Mm-hmm. इंस्टीट्यूशंस आर द पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स फॉर यू, कि आपको एक जॉब अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं, इंटर्नशिप का अपॉर्च्युनिटी देख सकते हो, और उस हिसाब से आपका एक कम्युनिकेशन, दैट इज़ अ मॉडल व्हाट इज़ क्रॉस कटिंग, academic writing, reading comprehension, critical thinking, Mm-hmm. etc. Then internship component, and then there are 4 domains in which हमने courses को बांटा है। Yeah, that is a model. It is a full of package of experiential journey and very exciting journey of the fellows. So I would That's say that really great to know. one E to other E, explanatory part to experiential. So theory आपको explain Great. करेगा, और experience आपको आपका explanation को बहुत सारा मतलब clarity से आपको एक situation create करेगा। Very well defined, Chetanji. So, how to apply for this opportunity? See, as we have our own website, web page, which has a separate web page within the main website, जैसे आपका application form है, Mhm. उसमें हम लोगों ने आपका एक मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको कंप्लीट करना है। फिर Mhm. आपका जो मिनिमम डिटेल्स की आपका जो बैकग्राउंड एजुकेशन वगैरह है वो फिल करना है। So it's all online. While you're most Okay. welcome to visit us to see the beautiful campus, which is spread across more than 120 acres of land in Bangalore, Wow. next to a lake. जो बोलते हैं ना कि जो Okay. river is a source of civilization. So lake is also something similar to us. It's a source of knowledge and wisdom. So you should visit and see. You're most welcome. We'll be able to take you around the campus. Those who are keen to come, including Saraswati yourself also, please do visit Yeah, us. sure, sure. I will come. सो ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन क्यों रखा है कि उसके बाद हमारा एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू विल बी डन बाय डिस्टिंग्विश्ड पैनल, एंड देन वी विल बी मेकिंग एन ऑफर टू यू फॉर एडमिशन। देन देयर आर सम Okay. scholarships also available based on competition and merit come means mode में। ओके सो एस्पिरेंट्स आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट पे है। एंड अगर आपने वीडियो देखा होगा जो 2 दिन पहले डाला था, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, और अभी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट।
एंड आई गेस चेतन जी, एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसमें एसओपी मांगा है। एसओपी अपलोड करके फॉर्म पूरा कंप्लीट हो सकता है, एंड आफ्टर दैट ओनली वन इंटरव्यू, राइट? Yes, we'll have an interview, and then based on that interview score, we will be able to. And we are also working on certain timelines. It's a admission is on rolling basis, as and when Mm-hmm. we are very keen on quality rather than quantity. So that is why we are Exactly. keeping it on rolling basis to the extent that we can close at the earliest, but the process is still on. So, actually, you are saying that timelines as well, and I also want to know about the scholarship more, because there are so many aspirants जो बाद में भी ये वीडियो देखेंगे वो भी कंफ्यूज होंगे कि फीस है, स्कॉलरशिप है, वो पूरा अगर हम एक बार क्लैरिटी दे दे तो ज्यादा सही रहेगा, आई गेस। Sure. See, the timelines are that we'll be starting from last week of August. ओके। That is by 26th, 27th August, we will be starting our academic program. So हम्म। that is the first timeline. Second is about the fees. That is, sorry, first is about the timeline. So in the timeline, we will open ourselves for applications till second week of August. बिकॉज अभी हम्म। सीबीएसई का रिजल्ट कल रात को आया है. काफ़ी सारे पीजी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वेरी कीन on exploring options elsewhere. So we should यस। acknowledge that space and accommodate their choice and opportunity. So वो हम थोड़ा open करेंगे. उसके अलावा commencement of the courses is last week of August. That is हम्म। so coming to the you were asking about the फीस एंड स्कॉलरशिप मॉडल। so the total tuition fee मतलब जो आप कोर्स के लिए फी पे करोगे is 5.5 lakh rupees for the entire duration, ओके। and the hostel fee is ranging from 1.3 lakh to 1.5 lakh for food as well as stay. सो इन ओके। बैंगलोर आप समझ सकते हो कि 1.5 लाख फॉर एंटायर ड्यूरेशन, इट्स वेरी वेरी हाई एक्चुअली. कुछ कुछ जगह पे तो ये एक महीने का ये होता है मतलब हॉस्टल फी, बट वी आर सब्सिडाइजिंग बिकॉज ऑफ द support that we are getting from various places, and we also have scholarships on need. So that is the other component. Then there is also that the faculty who will be coming are one of the best in the world, as we know from the brochure that there are people who are in Indian foreign policy में जो काम किए हैं, economics में जो हाँ काम हाँ। किए हैं, काफी reputed faculty. That's why it might appear that the cost of fellowship is very high, but if you compare it डेफिनेटली या। with the faculty whom you will go abroad and get educated, it is much much less. कि आप उधर यूके या यूएस जाके पढ़ने से वो लोग इधर आके आपको पढ़ाने पढ़ाते हैं, तो कॉस्ट इज very very less, right? So that's an what you call decision that you have to make, but that is why we are assuring quality rather than quantity. So yeah, that's the ओके। piece. Yeah. ओके, थैंक यू। सो एस्पिरेंट्स, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी व्हाट इज द फीस एंड व्हाट इज द लाइक नेक्स्ट प्रोसेस, एंड उसमें आपको क्या क्या कौन कौन सी फैकल्टीज आएंगी आपको पढ़ाने के लिए एंड बाकी सारी चीजें। तो फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग द फीस, स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, उसके लिए क्या प्रोसेस करना है, तो उसके लिए आपके पास स्टेप एड की टीम भी है, और हम आपको चाणक्य यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट मेंबर से भी कनेक्ट करवा सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट विद अस। ओके फाइन। सो लेट्स, वैसे तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमने काफी बातें कर ली है, बट अगेन आई वांट टू नो लाइक व्हाट इज द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द फेलोज, Yeah, I think की लर्निंग। entire या। fellowship itself is a learning opportunity that I would say the day they come to the day they leave formally हाँ from हाँ। the system, it's a full of learning opportunity. So I think we need to just ensure that that has to be provided to them. So give an example of learning opportunity. One is classroom. So I'm not getting into the conventional learning opportunity, but there is something called as या। corridor learning, food court हम्म। learning, campus यस। learning, beyond campus learning. These are all learning opportunities, and that is why it makes a difference that everybody has to explore this 1 year of uh, reflection. I would say because मैंने जो बोला था पहले, अपने आप को आईने में देखने से पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल बिल्कुल। मैंने यूटिलाइज किया अपने आप का.
सो ये एक रिफ्लेक्टिव ईयर है। ऐसे तो हम लोग एक साल ऐसे ही चला जाता है ये वो करके, तो इज अ इन्वेस्टमेंट। There will be a good return of investment for learning opportunity. So learning opportunities maximum, but you have to make the best out of it. Okay. So now let's discuss about the what are the career opportunities after this fellowship. I mean, if the fellows will get the placement support and any other guidance or to get placed. Correct. So the career opportunities wise, it's quite clear because if you're investing the golden period of your life, we have to really ensure that we give back in terms of. So we are very much keen to sort of provide opportunity to think tanks, जैसे हमारे various think tanks जो institutions जो काम करते हैं, उधर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम ऑफिसर्स, रिसर्च एसोसिएट्स, रिसर्च असिस्टेंट्स Mhm. वगैरह जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका एक एडवांटेज रहेगा, क्योंकि जहाँ मैं इंटरव्यू पैनल में बैठता हूँ उस तरफ Mhm. जो सिलेक्शन के लिए बैठता हूँ, तो मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है कि आपका राइटिंग स्किल्स कैसा है और आपका थिंकिंग स्किल कैसा है, मतलब क्रिएटिविटी, क्या कैन यू Okay. सॉल्व अ प्रॉब्लम और नॉट। तो वो अगर Hmm. स्ट्रेंथन हो जाए, इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना, जैसे एम्प्लॉयमेंट स्किल हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया। So employability skill is important rather than employment. So our job is to ensure you give maximum employability skill in terms of thinking, problem solving. And during your capstone project और transformational pathways जो हम लोग बात कर रहे थे, आपको expose Mhm. किया जाएगा to various institutions. So as part of internship also. So there you need to Mhm. convert that opportunity into something big, because that's an opportunity given to you. And secondly, the other way of looking at is that one is employment. That is definitely one. The Mhm. other is higher studies. काफी सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो लगता है कि दैट 2 साल मास्टर्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि 1 साल का पीजी डिप्लोमा हम इन्वेस्ट करें और अब्रॉड में जाके अपना डिग्री करे, या इंडिया में कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट में अपना पीएचडी जी. करे या कोई हायर स्टडीज करे। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रेंथन करे और उसका क्रिटिकल थिंकिंग जो मैं बात कर रहा था वो एक एटीट्यूड डेवलप करे। So these are two possible pathways. So and then of course the other one would be international NGOs, United Nations, World Bank, Mhm. and all. That's also Definitely. another possibility that one can think of. But right now, these two are in our hand, and that's what we will take things forward. Yeah. Okay. सो आई होप एस्पिरेंट्स आपको अभी समझ आ गया होगा कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है और कितनी एक बिग अपॉर्चुनिटी आपको ये मिल रही है कि आप यहाँ पे जाके सीखो, लर्न करो, एक्सपीरियंस करो, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो गेन करो, उसके साथ ही जो थेरेटिकल नॉलेज है वो भी आपको मिलने वाला है, वो भी ग्रेट एक्सपर्टीज के साथ। तो आई फील दैट इसकी 1-2 साल पहले मिल जाता तो मैं कर लेती। I wish too. I श्योर। wish too. ओके। तो So इसलिए चेतन जी। सो मैं और या। एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पीएचडी का जो बताया था ट्रांजिशन या स्टडीज का, हाँ कि हाँ। आपने जो ब्रोशर अभी जो आपने डिस्क्रिप्शन में डाला है, अगर हमारे जी। व्यूअर्स उसको देखे, तो फैकल्टी लिस्ट हम्म। देखने से आई विश, एज यू सेड, द फैकल्टी दैट वी हैव, आई वुड लव टू सिट इन दैट क्लासरूम। In fact, I hope I can still have the opportunity to listen to them, जैसे प्रोफेसर जॉन लुई आर्कान, who is one of the best हाँ। economist है, और उसके बाद निकोलाई वेंजल, प्रोफेसर हर्ष पंत, मतलब इनका इनका लेक्चर सुनने के लिए हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा एक जो रेप्यूटेड फैकल्टी मेंबर है। आई थिंक दैट itself will change your approach to education and the way you think at. So that is what we are looking forward to. I think that's what is another opportunity I can think of. Yeah. आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल दैट कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज एक लाइक एक जगह पे लाके सब जो इंडियन यूथ है उनके लिए ये अवेलेबल है। Correct. रियली ग्रेटफुल। सो जैसे चेतन जी बहुत सारे कुछ डाउट्स माइंड में आते हैं फ्रेंड्स के रिगार्डिंग की लाइक आई डिड द पीजी, क्योंकि एक ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है जो, तो वहां पे लाइक यूजी कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद पीजी करना है एंड देन जॉब करना है, ये सारी चीजें होती है। सो लाइक
like one of the question like ki, I did the PG, so it is useful for me to do this post graduation course for Chanakya University. Like Yeah, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी अगर किसी ने किया है तो क्या वो ये वाला कोर्स उनको सही रहेगा? सही है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज़ दैट डिलेमा सबको रहता ही है कि और एक जी। डिग्री कर सकते हैं क्या? So I myself have done two postgraduate degrees. So I had masters in political science and then I did masters in lifelong learning. So in both ओके। scenarios, I have realized one thing that first masters uh, opened my eyes, and second हम्म। masters में I was able to apply things to ग्रेट। do. But that is those days in a sense जब वो masters का situation ऐसा था। अभी तो हाँ हाँ PhD has हाँ। become minimum today, right? To यस। those days when a bachelor degree was मतलब 10th standard ही जो एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट था 10th जो बोर्ड एग्जाम, देन 12th हाँ जी। डिग्री हो गया, अभी मास्टर्स हो गया। तो anyways the point I'm trying to say here is that how much ever you do is less, but the decision is in your hand. वो तो हाँ है तो ही। आपको सही। कौन सा एक जो डोमेन है आपका उसको स्ट्रेंथन करना है। while you strengthen हम्म that one domain, how are you going to also make your horizon broader, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हार्ट, हेड एंड हैंड, 3H, ये जो तीनों अगर हमको अप्लाई करना है, जो जितना भी पढ़े वो कम है। तो इसीलिए दिस आई वुड सजेस्ट दैट इट विल ओनली हेल्प यू टू strengthen, sharpen your knowledge, and also hone in certain way that you can evolve into a full human being. I'm not saying that a postgraduate diploma will be also sufficient. Let me be very honest हाँ हाँ। कि वो एक आप ये यस। जो हमारा डिप्लोमा करके या आपका जो फेलोशिप करके आप आपके ऊपर एक वो जो रिंग आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट द एसेंस will keep on adding to your knowledge, and clarity will keep emerging. Yeah, that is most important that we get the clarity of what is our private dream, what we want to do. एंड अगर वो एक बार मिल जाए ना तो यूथ जो है सही डायरेक्शन में चला जाता है। Right. सो चेतन जी हमें एक क्वेश्चन आ रहा है लाइक तो कि इज देयर एनी लोन सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी थ्रू द पार्टनर बैंक्स? Yes, we do. ये We do have. ओके Yes. फाइन। सो डोंट वरी, एस्पिरेंट्स लोन प्रोसेस भी है आपके लिए, सो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि फीस इतना है कैसे करें क्या करें। सो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप बस इफ यू लाइक द कोर्स, इफ यू वांट टू गो देयर, जस्ट मूव अहेड एंड टेक अ स्टेप अहेड। या तो ओके फाइन। तो आ रहे कुछ कुछ क्वेश्चंस लाइक अभी ले लेते हैं थोड़ी देर में और भी क्वेश्चंस। तो उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एज वी नो दैट काफी टाइम से जो है सोशल सेक्टर में अगर करियर बनाना है तो एक एमएसडब्ल्यू का ट्रेंड चलता आ रहा है कुछ पिछले कुछ सालों से। तो कुछ एस्पिरेंट्स का लाइक ये भी थॉट होता है कि मैंने अभी एमएसडब्ल्यू कर लिया, अभी सोशल सेक्टर मेरे लिए ओपन है एंड दैट्स इट। तो क्या सिर्फ एमएसडब्ल्यू करना सफिशिएंट है एक अच्छा सोशल सेक्टर में ग्रो करने के लिए? See, MSW is a very important degree. We should not, especially COVID-19 में जो MSW professionals का जो रोल रहा और significance रहा, वो काफी हम्म मतलब appreciative है of the fact that they have not just for COVID but before that also they have done. So it's a, if you're comparing fellowship with MSW, then it is maybe very hard to compare. But I can take that as an example. कि why if I do MBA, if I do MSW, if I do MA Sociology, MA Political Science, MA Economics और MSc Economics, so ये सब करने के बाद भी मुझे ये करना है, I would say yes. uh, why you should be thinking like that is because see there you get into specialization, there you get into either theoretical or practical exposure, but what is more important is bringing that knowledge into the comprehensive perspective of social sciences, of issues which are to be able to address, and more important, as I said, think creative and critical to solve a problem. See, that is very, very important. So fellowships are not only giving you knowledge, but also making you as a change maker, a leader.
and also maybe in future an entrepreneur also, right, with that leadership skill. So essentially ये जो typical running courses है वो traditional courses are most welcome, but because Mm-hmm. of the nature of education, because of the nature of teaching learning, because जैसे 120 लोग हैं या 60 लोग हैं 30 लोग हैं क्लासरूम में, तो Yes. करिकुलम तो दिया गया है, करिकुलम तो उसी फ्रेमवर्क में रहेगा जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज में है, वो भी इम्पोर्टेंट है। बट फेलोशिप में एडवांटेज है कि वो फेलोशिप मतलब करिकुलम इज टेलर मेड, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिजाइन किया जाएगा, राइट, एंड स्पेशली आपका जो असाइनमेंट है, आपका जो पेपर्स है, ट्यूटर्स है जो आपके साथ क्लोजली एंगेज करेंगे, उसके जी. जो उसका जो एक्सपीरियंस है, इट इज नथिंग इक्वल टू दोज ट्रेडिशनल डिग्रीज, right? So Yes. that is Definitely. very different. So hence that we value the conventional master's degree like MSW, MBA and all. At the same time, we value this because it will only help you to extend that knowledge base, and that is what is the order of the day today. Step ahead is the best example. You see, when you started step ahead to what it is today, how many fellowships have come Yeah. today? There are so many fellowship. In fact, हम खुद नए नए से देख रहे हैं कि ये भी आ रहा है. Last time तो नहीं था. Correct. So yeah. आप जब शुरू किए होंगे तो सिंगल डिजिट में होगा, अब 3 या जी 4 जी. डिजिट में होंगे, अब पता नहीं। That's the order of the day. We have to align to the need of the hour, and with leadership skills and the soft skills और life skills जो हम बात करते हैं, वो फेलोशिप हम्म. में आपको उसको एक्सपीरियंस करने में, अप्लाई करने में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, जो यूजुअली जी. टिपिकल यूनिवर्सिटी में थोड़ा अभी इवॉल्व हो रहे हैं, बट इट विल टेक सम हम्म. टाइम। Okay, so again the electricity is gone. So let's continue with the voice from my side. So चेतन जी, और एक क्वेश्चन आया है हमारे पास फ्रेंड का that how the program help in getting good jobs. So as I mentioned partly, Yeah. maybe I will stretch a little bit more. See, one is हाँ हाँ. the exposure that you have in terms of learning. That itself is going to be हम्म. different from a traditional university setup. So वो आपका जो जॉब कोशंट है, एम्प्लॉयमेंट कोशंट जो है वो बढ़ाएगा, क्योंकि आपका जी. जो अप्रोच होगा वो चेंज होगा, बिकॉज देयर हियर यू आर थिंकिंग इन अ मोर अप्लाइड वे, मोर क्रिटिकल वे, मोर innovatively and creatively, because that space is given to you. You're not sitting in class from 9 to 5, ये बीच में एक आधा घंटे का ब्रेक हो गया, 20 मिनट का ब्रेक हो गया, नहीं, इट्स अ मोर ऑफ एन इंटरेक्टिव, सो पीयर टू पीयर लर्निंग प्रोसेस में आपका जो थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट रियलिटी इज गोइंग टू बी चेंजिंग, नंबर वन. Number two, the faculty members who are coming, the eminent faculty members. So they also bring their own expertise in telling you हम्म. what competencies you must have and how you can apply what you have learned to the larger cause of the social change, etc. वो क्लासरूम का जो डिस्कशन है, एक सिंपल क्वेश्चन, एक एक जो क्वेश्चन फ्लोट करेंगे क्लासरूम में, उनका जो लर्निंग टीचिंग स्टाइल होगा, that itself will make हम्म. you a more competent person to be, you become a competitor with other regular मतलब कैंडिडेट जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है. So that is other. Yes. The last thing is about, according to me, is you are getting your depth measured by taking up specific area and become a specialist Yeah. by doing lot of assignments वगैरह वगैरह जो है, presentations होगा. So उसके अलावा आपको हम्म. breadth भी मिलेगा, depth भी मिलेगा, breadth भी मिलेगा. Domain wise you get a breadth, and area wise and interest wise you'll get a depth. So that is what we call as V-shaped individual, right? So you have the breadth and then you have the depth. So, and along with your soft skills and life skills, that will make you more employable. So I would, that's why I was constantly saying we'll use the word employability rather than Yeah. employment. So Yes. employability is our target. Employment is your effort based on that employability. Right. Yes. Yes. Definitely. So Chetan ji, we have another question. Like, there are any opportunity for PhD after this? So directly doing a PhD, if you have a 4 year undergraduate degree and then you do this Mm-hmm. course, as of now, UGC has initiated. Let me say simply, yeah, in simple sense, you will not be able to you cannot apply for PhD
uh, after this course. That is one clear message as of date. That is July 21st, 2023. May. But to the viewers, I would like to tell that there is a draft report, the National Credit Framework, aligned with Mm-hmm. any. There is a clear indication that going forward, एक साल का मास्टर्स आने वाला है, ठीक है, Okay. वो 40 क्रेडिट्स का होगा. सो हमारा जो पीजी डिप्लोमा है ये वाला, ये भी 40 क्रेडिट्स का हमने इसीलिए बनाया है. यूजुअली हाँ. 32 क्रेडिट्स का होता है, हमने 40 क्यों बनाया है? अगर अभी कुछ वीक्स में या मंथ्स में वो एक रूल Mm-hmm. आएगा तो इमीडिएटली इट विल बी इक्वलेंट टू 1 ईयर मास्टर्स. सो वी डोंट हैव Okay. टू चेंज द एंटायर सिस्टम. सो वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस चेंज. एज आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया एनईपी के बारे में, आई वर्क विद दैट, सो आई न्यू दिस थिंग इज कमिंग. सो इस हिसाब से हमने प्लान किया है. तो इस साल अभी जो यूजीसी का जो गाइडलाइंस है अभी ड्राफ्ट है, पब्लिक डोमेन में है. Mm-hmm. कॉल्ड, आई लाइक टू टेल द व्यूअर्स, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, Okay. एनसीआरएफ. हम लोग Mm-hmm. पहले बात कर रहे थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का, वो नहीं, Yes, yes, नेशनल yeah. क्रेडिट फ्रेमवर्क. सो 8 Great. स्टैंडर्ड से पोस्ट डॉक तक कितना क्रेडिट होना चाहिए वो अभी लिस्ट किया गया है, और कितना घंटों का होना चाहिए एक क्रेडिट वो भी लिस्ट किया गया है. उसके हिसाब से 40 क्रेडिट इज इक्वल टू 1 ईयर मास्टर्स और अब पोस्ट Okay. ग्रेजुएट डिप्लोमा. तो हमने ऑलरेडी अलाइन, हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी अलाइंड है, और हमारा सिर्फ ये एक ही प्रोग्राम इंडिया में जो ऐसा अलाइंड है. सो वो Yes, एक यूनिकनेस है. सो उससे surely. हिसाब से जो पीएचडी का है अभी इस साल एज ऑन डेट नहीं है. अगर वो कल यूजीसी का रूल आएगा तो हो सकता है. Yes. तो दैट इज व्हाट. So there are chances even. So guys, let's do the course. Just let's enroll, and I hope ये भी अपॉर्चुनिटी आपको जल्दी मिलेगी. So वैसे तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि there are other prestigious universities, institutions are available in the social sector to provide the courses, and why one should enroll in the Chanakya University only. So So yeah, go ahead, please. What is it? नहीं नहीं, let's continue. Yeah. Okay. So why should they enroll in this program, right? And university, Chanakya University. As I said, हाँ. the residential program is very very important. हमने जो ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम जो हम लोग बात करते हैं वो हाँ जी, रेसिडेंशियल होते थे, और उनका एक इम्पैक्ट भी होता था, तो हमने बिल्कुल, सुना है. बहुत अच्छा. करेक्ट. तो उसे हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट. एक जो हाँ. इंसान का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है और वो एवोल्यूशन है, वो एक इस सेटअप में होता है. नंबर वन, ऐसा नहीं कि हम लोग यूनिक है रेसिडेंशियल प्रोग्राम में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है. एट द सेम टाइम many institutions don't even have residential program. So hence, Yes. in the whatever the numbers in the country where residential program is, we are one of them. But that is our Mm. uniqueness, because it's very not easy to have residential program. बहुत responsible job है वो. तो which Yeah, definitely yes. हमारे leadership has been very clear कि residential होना चाहिए. Number one. Number two, I would say is that जब हम इधर कोर्स आप लोग करेंगे जो फेलोज फ्यूचर में, आप फेलोशिप के कोर्स के लिए सीमित नहीं रहेंगे. एक हाँ. यूनिवर्सिटी मतलब हमारे यहाँ बाकी सारे कोर्सेज भी हैं. जैसे हम हम्म. लोग ये फेलोशिप के एडवाइजरी काउंसिल चेयरमैन है प्रोफेसर विवेक देब रॉय, जो Okay. प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन है. जो जब आप वो जब कैंपस आएंगे, राइट, और कोई और सीनियर एमिनेंट पर्सन आ रहा है दूसरे प्रोग्राम के लिए, सो हमारे फेलोज भी वो प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे. सो यूनिवर्सिटी जो इकोसिस्टम है उसको मैक्सिमाइज करने में एक एडवांटेज है. मतलब आप सिर्फ क्लास अटेंड नहीं करेंगे फेलोशिप का, बट यू बिकम पार्ट ऑफ द एंटायर यूनिवर्सिटी and its program and activities. And third, I would say, is also the faculty members. ये eminent faculty जो fellowship वो तो रहेंगे ही. उसके अलावा दूसरे जो प्रोग्राम है हमारे, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, Yes. ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंस है, लिबरल आर्ट्स है, उसमें भी एमिनेंट फैकल्टी है. जो आप मैं बोल रहा था लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम, जैसे Yes. आप कैंपस में रहेंगे, और फैकल्टी भी कुछ लोग कैंपस में रहेंगे बाय द वे. सो देयर इज एन Yes. ऑकेजन टू इंटरैक्ट. There's occasion हम्म. to interact, and that is why by campus it is very unique. By courses that are offering and faculty are unique. And third is the ecosystem beyond the campus also that we are providing as part of our engagement is also unique. So that way, this is the reason why they should be exploring.
डेफिनेटली इवन वी हैव अगेन एक क्वेश्चन आया है हमें। वैसे तो आपने बता दिया था कॉस्ट ऑफ रेसिडेंस, बस फिर एक बार फिर से बता दीजिए तो कि रेसिडेंस तीन टाइप है सरस्वती जी। एक है ट्रिपल शेयरिंग और डबल शेयरिंग। सो ट्रिपल शेयरिंग इज अराउंड 1.2 to 1.3 lakhs एंड हाँ डबल हाँ शेयरिंग इज अराउंड 1.4 to 1.5 lakhs। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर एज आई सेड बैंगलोर में ये कॉस्ट बहुत ही सब्सिडाइज्ड है। एक साल जी के लिए इज इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10,000 रुपीज पर मंथ with यस food. यस So यस। that is the cost that we have. Yeah. सो और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है एक्चुअली। एक एस्पिरेंट ने पूछा है कि हाउ विल इट हेल्प दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। Yeah, so actually, this is a good question. Why? Because we are also seeing a lot of applications who have come here after they have tried civil services. हमारे या जो अभी तक जो applications आ रहे हैं, मतलब 300 के ऊपर जो application अभी आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर तो civil service aspirancy है। मतलब जी क्योंकि उनको अभी लगता है कि दैट हमने काफ़ी डीप गए सब्जेक्ट के बारे में, मगर अभी उसको हमको अप्लाई करना है, मतलब सोशल चेंज के लिए। बिकॉज why do I do civil service? Majority of them think because they want to become social change makers, right? या Because they want to contribute to society. So the same thing is also available here, right? So leadership skills वगैरह जो मैं बात कर रहा था, soft skills के बारे में। So जो prepare करके attempts करके जो लगता है कि now अभी I have to get to job, that is one group. But ये question जो है ये ऐसा पोज किया गया है कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कैसा हेल्प होगा। तो यस उसमें मैं बोलूँगा कि सोशल साइंस का जो एम्फसिस है, वो तो काफ़ी सारे डोमेन जो मैं बात किया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये 4 डोमेन, चारों डोमेन जनरल स्टडीज़ में भी आएगा एज़ अ इम्पोर्टेंट हाँ डोमेन एंड हाँ मेंस में भी हाँ उसका बहुत सारा वैल्यू रहेगा, राइट? या बट ओनली थिंग इज़ यू हैव टू do the academic part as well as look into preparation, because it cannot assure you success in civil service, right? And no, nobody can assure that, but it will only help you to broaden the knowledge, rather go deeper into the knowledge base. Last one example I'll give, like we when you talk about rural development, आप जब हाँ पढ़ते हो जनरल स्टडीज के लिए आप पढ़ेंगे 73rd 74th अमेंडमेंट का डिफरेंस, आप बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे एलसी जैन कमेटी का रिपोर्ट, और वैसे वैसे जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे या रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सिविल सर्विस के लिए। यहाँ या पे उसका वो सब्जेक्ट का आप डिबेट करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों रेकमेंड किया, एम नरेगा ऐसा क्यों है, वो उसका क्या मतलब इम्प्लीकेशंस है पॉलिसी के लिए, सोशियोलॉजिकली हाउ डज इट इम्पैक्ट, इकोनॉमिकली हाउ डज इट इम्पैक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स perspective. So this thing is unique, and this thing will make learning more fun rather than memorizing and by hearting, and making it more critical thinking. It will remain with you for long time, whether useful. एंड मोर इम्पोर्टेंटली सरस्वती जी, मैं और एक चीज़ बोलना भूल गया जो इस सवाल के रिस्पॉन्स पे हाँ था, जी कि सिविल सर्विसेज में जनरल स्टडीज के बाद जो मेंस लिखते हैं, जी उसमें जी इन एडिशन टू योर नॉलेज, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू शुड नो हाउ टू राइट इफेक्टिवली, मतलब जो, डेफिनेटली। so ये जो राइटिंग स्कोर, ये तो जो पेपर्स होते हैं लाइक कुछ कुछ एस्पिरेंट्स बाद में स्प्रे लगाते हैं हाथ में, मतलब हाँ, उनको हाँ वो टाइम में वो सब कुछ लिखना कवर करना वो सारी चीजें बहुत करेक्ट, वो तो एक आप जो बोल डिफिकल्ट। रहे हो सही है, करेक्ट, स्पीड का हो गया। और स्पीड क्यों आता है कि आप अननेसेसरीली यू राइट मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो या राइट लेस इज वेरी चैलेंजिंग व्हाइल यू कम्युनिकेट मोर। राइटिंग मोर इज इजी, एंड विदाउट कम्युनिकेटिंग वो अलग बात है। तो एक्चुअली इसलिए आर्टिकुलेशन इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, सो जो हमारा जो क्रॉस कटिंग कोर्स है, academic writing, creative writing, that will also help them to, in addition to domain knowledge, going deeper, asking critical questions. So जो academic, so ये दोनों मिलके जो इंटरव्यू में आते हैं फाइनली, जो हाँ हाँ अभी रोल डेवलपमेंट का मैं बात कर रहा था, वो भी एक एडवांटेज है कि वो एक कम्युनिकेशन स्किल का इम्प्रूवमेंट होगा, जो लाइफ सॉफ्ट स्किल वाला जो कंपोनेंट मैं बता रहा था। बिकॉज हमारे फेलोज जो होंगे वो भी बहुत ही यूजफुल रहेंगे कि वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उसको उनको भी मेंटर करें कैंपस में, बिकॉज दे विल लुक अप टू, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लुकिंग अप टू आवर फेलोज एज मेंटर्स, इनफॉर्मल मेंटर्स, हॉस्टल में, कैंपस पे हम लोग एक occasion create करेंगे peer to peer learning, so they will learn that skill of communication also, in addition to the regular communication skill that we'll have. So essentially
जनरल स्टडी से लेके मेंस में राइटिंग एंड also for interview it will be very helpful if they think like that from that एक्चुअली एक perspective. ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा ना। इट मीन्स हाँ, कि सोशल इशू, सोशल सेक्टर कैसे सोचना है, क्या फैक्ट्स है, कैसे correct, मतलब वो सारा एक नॉलेज जो है उसी बेसिस पे तो मेंस लिखने के लिए उनको काम में आएगा, इंटरव्यू फेस करने के लिए उनको यूजफुल रहेगा। correct, सो correct. आई थिंक इट्स गुड, बेनिफिशियल फॉर दोज एस्पिरेंट्स एज वेल। So, Chetan ji, let's discuss about the who will be the most suitable candidate for this opportunity, and in perspective of the qualities, what you are looking for, profiles, values, and future goals alignment. So it's very hard question to answer because everybody is eligible who has the interest and commitment and जी। passion to solve. But if I have to put it in numbers, मतलब quantitatively अगर हमको डालना जो difficult है बहुत, I would हम्म। say see our application, our interview process हाँ। evaluates the candidate on certain parameters. That is the candidate's comprehension. मतलब जब हम सवाल पूछते हैं और उनका हम्म। जो अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंड कैसा करते हैं उसका एक वर्टिकल है पॉइंट है एंड देन देयर इज कम्युनिकेशन स्किल एज वी डिस्कस्ड हाउ आफ्टर यू कॉम्प्रिहेंड हाउ डू यू कम्युनिकेट इज आल्सो इम्पोर्टेंट देन इंटरडिसिप्लिनरिटी आप अगर साइंस स्टूडेंट है तो आप सोशल साइंस का कैसे लिंक करेंगे सोशल साइंस से साइंस को कैसे लिंक करेंगे वो हाँ भी जी। हम लोग एसेस करते हैं एंड देन क्रिटिकल थिंकिंग जो आप एक दृष्टिकोण रहता है उसका अलग तरह से कैसे सोच सकते हैं क्रिटिकली बिकॉज दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग so whether you are able to communicate the problem and solve the problem or give solutions to a problem so Yeah. these are the candidate who has all of these five particularly but as I said it's very hard to say 1 + 1 = 2 but this is just a reference कि ये जो पांच जो panchakoshas of that, or what they call, are what we are looking for. But it is not limited to that. But there is only a reference point. So that's our ideal candidate. Okay, fine. So, what message would you like to convey to the upcoming batch and future applicants? So the only strong message I would like to communicate is that there is no end to learning. Yes. And when you learn, you be an analyst and not be an activist or an advocate. You can always become an activist and advocate based on your analytical thinking. And hence, I would only tell you that the current and the incoming and the next subsequent batches Uh-huh. that we have will adopt this and then make a change in the society at large. Yeah. Thank you so much. And Ainley, what message you want to convey to the Stay Ahead India and its team? I congratulate and appreciate the efforts or the step ahead India is making, and the entire team is doing a great service. And I wish and I hope our fellows will be also, visible on your website in due course because you are now already making impact for the future fellows of the nation. And I really wish you all the best and look forward to working with you and helping more and more fellows, whom I call change makers, to come through for a young, aspiring, and vibrant India that we are all witnessing. I think this is an opportunity for all of us to really step ahead India. Yeah. So thank you so much, चेतन जी। यहाँ पे आप आए, आपने अपना पूरा नॉलेज बेस लाइक एनईपी हो, एनसीएफ हो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो अभी के लिए, एंड चाणक्य जो फेलोशिप है इसके अराउंड, जो यूनिवर्सिटी के अराउंड जो बातें करी, बहुत ही डिटेल में ये डिस्कशन रहा है। आगे जो भी ये देखेगा उसको पूरा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि क्या है एक्चुअली सोशल सेक्टर में अभी नीड क्या है, क्यों जरूरत है ऐसे कोर्सेज करने की। बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। एंड एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप स्टेप अहेड इंडिया टीम को भी रीच आउट कर सकते हैं, चाणक्य यूनिवर्सिटी टीम को भी रीच आउट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो स्टेप अहेड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सोशल सेक्टर से जुड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज, फिर वो फेलोशिप्स हो, इंटर्नशिप्स हो, या फिर गवर्नमेंट यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हो, इन सारे
अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, एंड आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारा, या तो चेतन जी, थैंक यू And सो I would मच like to फॉर। take this opportunity to thank the leadership team of Step Ahead India, and more importantly, my colleagues, Mr. Vinay Venkatraman and Dr. Kumaraswamy, who is very much part of our team. So those are fellows who will be applying. The first email knocking at your door will be from Dr. Kumaraswamy. And those who are on social media, Vinay is reaching out to them, so they have been doing great job. So that's I wanted to acknowledge, and also the Step Ahead India leadership team, and of course Saraswati ji for having this conversation. Okay, thank you so much, Chetanji. It's honor for me to connect with you, and I'm just moderating this session. Thank you. And just last one question, एक Yes, yes. एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि रॉय सिंह है, वो Yeah. पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस फेलोशिप, एंड as in this where will be able to apply through this. So So you, yeah, go ahead. Sorry. नहीं नहीं, please continue. No, no, yes, it is very much valid. It is recognized by the University Grants Commission because any that's why fellowships अब दो टाइप का होता है, एक जो लीडरशिप फेलोशिप प्रोग्राम होते हैं जो डिग्री में कन्वर्ट नहीं होता है, because we are looking at young leadership. We should not be uh, taking away their opportunity to go higher for higher studies. इसलिए जो पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है इन सोशल साइंस, इट्स वेरी मच recognized and it is approved by the university authorities who are established by the act of the government as well as the UGC's recognition. तो ये validity का जरूर है. इसके बाद आप where apply कर सकते हो, then the horizon is open wherever you want to apply in terms of मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो या सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हो. As I mentioned, maybe Roy Singh ji, you in the beginning I was telling about currently the finalization of the national credit framework is happening. Once that is finalized, if 40 credits is equivalent to 1 year masters, then you are then आपका ऑप्शंस बहुत होंगे, आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं कहाँ जाऊँ. बट अभी के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है एंड दैट इज डेफिनेटली देयर, बट क्रेडिट्स मैटर्स. That is why we have kept credits as 40 so that you are, have more opportunity to apply elsewhere, unlike many others where they have 28, 32, 33. So we have kept it at 40. ओके, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिटी, एंड आई होप अभी सब क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स के आना बंद हो गया है, तो उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने कर दिए हैं, सारे डाउट्स उनके क्लियर हैं. एंड गाइस, फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है रिगार्डिंग हाउ टू राइट एसओपी, सीवी रिव्यू करना है, एसओपी रिव्यू करना है, आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं. विल डू दैट डेफिनेटली विद फॉर यू. एंड थैंक यू चेतन जी, बहुत अच्छा डिस्कशन था. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस. Thank you so much, Nusiji. Thank you all. Thank you all.